Hello, just wanted to do a little upgrade video. 14 दिन have been completed. मेरा quarantine खत्म हो गया है officially. So now I can go to the doctor. But the procedure here, मैंने जो अभी online देखा या पढ़ा है, I have to contact the doctor via phone. Then the doctor will call me back कि अगर मुझे in person आना है या नहीं आना. Then he will decide कि क्या what's the next step. So I guess मैंने call तो कर ली है, अब डॉक्टर पे वेट कर रही हूँ when he's gonna call me back. Hopefully it's early because मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं. Quick little update video. I've contacted the doctor. Finally got an appointment with the doctor. Doctor ने चेकअप करा है. He wrote me an ultrasound. दवाइयाँ कुछ नहीं है ख़ास बोली, बस मल्टीविटामिन्स बोली हैं. अल्ट्रासाउंड के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि आई एम ऑलरेडी 28 weeks माशाल्लाह से, and they say the case is kind of complicated. It gets complicated because if we're seeing baby's growth from the beginning, then it's easier. यहाँ पे करीब में जो मुझे अपॉइंटमेंट मिला है in the area वो 27th of August का मिला है, and it's 14th of August right now, so बहुत आगे है. I'm searching for someone के कोई करीब में मिल जाए जल्दी डेट का. Okay, just a quick little update. मेरा अपॉइंटमेंट हो गया फाइनली. अल्ट्रासाउंड के बाद बैक एंड फोर्थ कॉल करने के बाद कि डॉक्टर कह रहा है कि बहुत देर से है, वी डोंट नो द हिस्ट्री. सो आई हैव जस्ट email the ultrasound technician my history. अब उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है 17th का. So doing little blood work जो baby sugar check करता है, your sugar levels. So I have to do that. So मैंने एक ही दिन plan out कर लिया. It's easier क्योंकि आगे पीछे ही है. So it would, I'll let you know how it goes. Alhamdulillah, everything is sound and safe in my ultrasound. Now the doctor is gonna recommend me to a gynae. Hopefully gynae का appointment जल्दी मिल जाए because यहाँ पे in Canada it's really hard to get a कोई भी specialist तो बड़ी मुश्किल से मिलता है या मिलती है. So hopefully fingers crossed. Please pray for me कि मेरा process ये medicine process quick हो जाए because I'm starting to have these anxiety attacks now. The anxiety level is getting severe and real now, so hopefully it's gonna be fine. Everything's gonna be fine. The baby is fine, alhamdulillah, but the anxiety is getting real. Also the pandemic is not helping because अभी clinics पे इतना बुरा हाल हुआ है. You cannot just मुंह उठा के चले जाने वाली बात वो नहीं कर सकते. You have to make a call, then the doctor decides कि आपको in person आना पड़ने की ज़रूरत भी है या नहीं, या आपको डॉक्टर over the phone ही administer कर सकता है आपकी condition या बता सकता है आपको कि what's wrong. So the pandemic is not helping at all. It's giving me severe anxiety, that's for sure. So anxiety levels are like 1000%, and it's hard being alone, that's for sure. Missing my husband as well. Badi mushkil hai, to be honest.